Hi, good evening, everyone. So let's start with our session today. Okay, just hold on. I need to start the recording. Okay, great. I hope my screen is visible to all of you. Okay, today we are going to talk about one of the most awaited product of Global Garner. I think we took almost 2 years to build this up. So now what is GG community? Shall we, can you just mute this bell sound on every entry? Yes, sir. Okay, great. So let's understand what is GG community. Shall we? It is still coming. We'll wait for shall we to do it. Just hold on. Huh? Shall we? हो गया? Yes, sir. It's done. Okay, great. So let's now talk about our premium product, which is GG community. Many of you will think that this is a BNI or maybe a JCI platform that we have built, but I think we are totally different of normal communities that you have seen till date. If you see any business which is out there, they go out for networking, they go out for meeting people just to build their business. But in real sense, there is no community which really talks about business, which talks about how what stage of business you are, what funding requirements you have, no support for funding, no support for any cumulative activities, nothing. And therefore, 9 out of every startup fail today in India. And startup has become a fashion trend also, right? So now let's understand what is the difference between other communities and Global Garner community. First of all, it is all in one platform for success. Here, community will come together to understand, to learn about the lapse in their business and to overcome all the hurdles that they have in the business. Like, if you see, first of all, as soon as you will join the community, we will identify at what business stage you are in. Either you are an individual Alert from Google business, Chrome Helper. which is Alerts almost 0 Party to Popper the 3. 1st of March equals wishlist mode on shopping bags. Just hold on. So first thing that we will identify is what stage you are at. Let's say you are a 9-year-old business and still one man show is there. Then it means that there is some problem with the system. Let's say you are almost 15 to 18 years old business and everything still is governed by a single man. I think you need to understand that now your business requires different approach. So every approach, if you see individual driven business, which is 0 to 3 years, what are the what you can say? What are the what you say pointers that you need to take
if you are a 0 to 3 years, these are the pointers that you need to take. If you are not able to take this, then it means either you are not doing it well. It has to be as per your age. Your classroom should be there, right? जैसे एक बच्चे का होता है, if there is a kid, if he is, let's say, 20 years old and is still studying in class 5th, I don't think so that it is really doing justice to the age or the qualification that he should do. Same ways, we will first identify the stage of your business, and accordingly we'll set the parameters how you are going to take it forward. Then if you see, we are going to make it totally digital. So the entire community will be able to talk from maybe from Chennai to Kashmir. You will be able to see all the chapters, know what they are doing, chapter members, what are the strengths, what are the weaknesses, and you will be able to connect to each other through internet. So this community, first of all, talks to each other, and totally digital environment. I have seen many of the communities till date, and I'm surprised that still they are not adapting to the advantage of being connected on internet. Then these are the community offerings that we are going to give. First of all, comprehensive business support. So there will be a dedicated team giving you a comprehensive business support. Maybe it is your business funding requirement, and funding can be of many types. Like you might be asking for an equity funding. You might be interested in loans. You might be interested in subsidized loan. You also might not be knowing about the subsidies which are going to happen in your business. So here we will be educating you among all the offerings that government has for you. Then business and wealth programs, where we will help you to build your pitch deck. We will help you to build business plan. We will help you to train your people. So accordingly, we will do this. The third part is collaborative enrichment programs. Now, this is very important for all small scale industries. Why? Let's say you are a 5-people team. When we started at Global Garner, we were only 3 people in the office. So now, if we wanted to play a cricket match, of course, we along with 3 people could not ever play a cricket match. But let's say if that time something like GG community would have been there, we would have been the part of the community, and we would have enjoyed playing cricket with some other companies also. So like this, we will have n number of collaborative enrichment programs, and there are other exclusivities to this also. So now, elaborating on the comprehensive business support, first thing that we will do for you is national pitch deck. Today, I have seen n number of businessmen, they don't know how to pitch. Even I have learned it in a harder way, or maybe in a long period of time, how to pitch your business to anyone in just 10 to 15 minutes. I always thought that GG cannot be explained in 10-15 minutes. But today, I can explain GG in 10-15 minutes. Then detail pointers can follow for, let's say, 10 days. But a business ballpark idea can be given in 10 to 15 days. Generally, when people ask me, okay, you give me your pitch deck, we never had an idea. So I think that journey has helped us to realize that not every company knows how to prepare a pitch deck. So first of all, we will help you to prepare a pitch deck. What does a pitch deck does for you? First, at a glance, it gives an investor or maybe a prospect of yours to understand your business. Then detailed study can be done afterwards. To have that first interaction and first interest generated, you need a very small, crisp, like you have a trailer in movie, no? In trailer, you don't tell the entire story of the movie. But when someone watches a trailer, he understands what movie will be all about and what is the content of that movie. And then he might go to the movie theater and watch it, or maybe on Netflix, or maybe on any OTT. Same ways, we will prepare a national pitch deck for you,
and accordingly you can use it in your own business. We will give you tools to digitalize your entire stuff. Till today, you talk about any community. I have seen top to bottom all communities, they don't talk digital. They don't talk about creating a digital environment. They don't support any digital environment. So here we are going to give you n number of tools because we only have generated those tools which are beneficial for your business. If you are running a school, we can give you a tool. If you are running a retail shop, we can give you a tool. If you are a news reporter, we can give you a tool. If you are a trainer, we can give you a tool. So it is a global digitalization that we are talking about, right? Plus all these communities, we are going to have not more than 18,000 chapter across the country. So you have an exclusive niche audience to talk to. Acha, franchise and distribution support, dedicated RM for social media marketing. In the package, in coming slides, I will show you that we are also providing you a social media marketing package along with the community package. So now any community member who comes in will be eligible for a free social media marketing. So now to get that free social media marketing, it cannot be like, okay, we have designed something very standard for everyone. It has to be customized. So you can talk to our dedicated RM. You will have an access to him, and then he will support you for all your social media needs. One package is inbuilt, which will take the things forward. Rest for everything else, you can always talk to your dedicated RM. Networking with live broadcast. This is one great feature from our side, that you can have chapter members who are not attending the chapter, but still they are able to see the live broadcast of the chapter. So, and also you can have chapter members who are totally digital also. So let's say you are in Ahmedabad and some of your prospect wants to join your chapter, but they are not in the city. They are in some other maybe place. Let's say they are from Delhi, but they like what is happening in your chapter. So they can join digital chapters also. So we will come up with a concept called digital chapter participants. So they can be totally a digital chapter. They never need to come to the chapter meetings. Then you talk about national-wide expo and opportunities. You would have seen in Bangalore, Deva would have has done that expo. Same ways, when we'll have such a big community with us, we need not to go outside. Within the community, we will keep on doing such expos, which will help each one of us to build our own businesses. Because this business now, let's say somebody is from Karnataka, somebody is from Delhi, somebody is from Mumbai, somebody is from Tamil Nadu. Of course, all of you can come together and do an expo, which will not be an external expo, which will not be as expensive as external expos are, but it will give you an advantage over and above of what external expo could have given you. Then consumer rewards, of course, because you will be as a vendor in Global Garner, you're always, that GG vendor benefit is always there, right? Business and wealth program. Then we will also help you to build a business plan. Now, many of you will get confused between pitch deck and business plan. There is a lot of difference between creating a pitch deck and a business plan. I have met so many of my friends, they don't know what is their 5-year business plan. They say ki, okay, revenue aayega, we'll increase the inventory part, we will increase the machinery, we will keep on doing whatever is required once the money comes. But I have always said this, money is a byproduct of what you do. If you are not doing things right, money is not going to come. So it's a chicken and egg story. Which thing will come first? But end of the day, until you don't have that business plan, you don't know where to go. You don't know what you thought of and how well are things going on, how worse things are going. So you need a business plan in every business that you do.
So we will help you to do this business planning. Second, today's scenario, it is very difficult for all of us to have staff in our team. Even when you are ready to pay them, even when you are ready to hire, still you will not get a very skilled staff for your business. Plus, generally, people outside of your community might take away the staff that you have already recruited. So I think here also, once the community is built, when everybody is talking to each other, so at least you will have that cushion that yes, your staff will not go within your community because he knows what good he has done and what wrong he has done, and it can be told to the his new employer. Financing, as I already told you, we will help you go into any sort of financing that you require. You need equity funding, you need bank funding, you need subsidized funding, you need interest loan. Everything is now in house, and Jagdei Food is better example of it, that we have taken it through this financial project of our own. So if somebody wants to know how we have got the zero collateral loan of 1 crore rupee, they can come back to us, we can tell them. And because we have traveled that journey, now we are able to guide you also. And number of businesses don't know what are the permits and legals are which are required for their business. We will help you to acquire those also. Marketing and branding, as I already told you, there will be an inclusive marketing and branding activity in every chapter that we are going to do. Business training. Now every business has different training requirements. I have seen training means only motivation training. Everybody is talking about motivational training. So it is almost like not drinking milk but the glucon D. And assuming that glucon D will build your body, right? Glucose will never build your body. It is just for instant energy. When you are motivated, you have instant energy, but to build it on daily basis, you need to work. So business training, we will craft it in a way, what is your requirement? Your frontline sales requirement, your mid management requirement, what is your high state management requirement? Because not everyone is interested in only doing motivational training, which I have seen. When you talk to any corporate, they will only talk about motivational training, and there are n number of example of that, right? Now let's look at what are the collaborative enrichment programs that we have. We will be having outdoor games and team building exercises. We will be giving you books and health subscription to any corporate that joins this program. Social events and team outing. Other collaborative and enrichment programs, airport lounges and access. The best part of our airport lounge is, let's say you are eligible for 6 lounge access, and it will not be in any particular name. Today, whatever lounge access is there in your card, only that card holder can go. So let's say tomorrow, if that launch access, let's say I have 12 launch access for me, my son cannot go and access that launch because his name is not there. But our launch access is designed in a unique way that you will be able to send your employees, your family members, or anybody on that launch access, which is the beauty of this launch access that we have collaborated with. Other membership benefits, of course, you will get GG's prepaid card, in which you will have different eligibilities, in which you need not to pay any this amount, convenience fee. So you are not paying any convenience fee, still you are eligible for all the cashbacks that we are talking about. Then there would be a this charity program, national and international convention are inbuilt, and then the vendor benefit of Global Garner. Of course, some of the members will have the advantage of training other chapters also. Let's say you are doing 100 crore rupee business, and there are a number of businesses who need guidance to how to reach there. So I think this program will help them to first of all become a mentor and do a mentorship for the other chapters that are there.
Then OTT platform, as you all know that we have built our own OTT platform, which we can give to the our chapter members. Plus, we will also engage in activities where we will share some of the revenues on these OTT or maybe other programs that we are running for you. Like Vendo app is given to all the members which are there, but it is a shared Vendo stream app. So we will generate revenue on them, and on those revenues, we will have sharing with the chapter. So your chapter can grow with those revenues that we are generating for you. Even you can also generate the revenues. So let's say your chapter is of 50 people, but their subscription is of 1 million people, 1 lakh people. We can sell this equity of yours to the other brands to showcase their brands, right? Of course, I already told you there would be a dedicated RM, additional advantage membership packages, right? Now let's see what are the packages that we have. So we have designed it into 3 modes. One is essential, second is pro, and third one is elite. Essential starts with 90,000 rupees, and the minimum requirement to join this chapter is 90,000 rupees. What and 90,000 along with the GST. He must have a GST number with him. Until unless his business is not having GST number, he cannot join this chapter. Pro is for 3.6 lakhs. Elite is for 9 lakh rupees. For Pro, you need to have minimum turnover of 10 crore rupees. And for Elite, you must have a turnover of 30 crore rupees. Please understand, if you are ready to pay, even if you are ready to pay 9 lakh rupees for Elite, you will not become an Elite member until your company is doing 30 crore rupee business. Be very clear with this. It is, every club has been designed in a way because those benefits, further when I will talk about the benefits, you will be able to understand. The Elite member will not be able to relate with it if he doesn't have that turnover, because a 30 crore turnover company will have a totally different requirement than just a company which has just started, right? So please don't confuse, don't get bogged down with this ki I am ready to pay with 9 lakh rupees, but I am not able to get into Elite club. No, Elite is only for first requirement. Actually, we should write it above the price that we have quoted, that Elite will become, a member will become an Elite member after only 30 crore rupee business, Pro at 10 crore rupee business, and Essential with at least a GST in his name. Now, what I told about prepaid card, now in Essential, you will get 1 lakh rupees cashback card without paying any extra amount. So for up to 1 lakh rupees, there would be no extra charge that you need to pay. And you will get prepaid card also, and you can use it anywhere for any type of cashback of Global Garner. Second is, it is up to 4 lakh. Third one is up to 12 lakh rupees. So effectively, we are giving the entire cashback inbuilt to this card without any convenience fee. Third one is the OTT channel. Now the reach of these OTT channel will also be influenced by us. We will pump in money to influence, make it reach 1 lakh, 0.5 million reach, or 1 million reach, as per the package you have selected. In first package, sorry. In first package, we will share 50-50 revenue. In second package, we will share 70-30 ratio, where 70% is of you. In third package, we'll have 80-20 ratio, where 80% belongs to the Elite member club. Now, what is this monetization benefit? Again, because we will have traffic, because we will have audience, so we will sell this on premium to the brands to advertise themselves. And on those advertisement income, we will have this sharing. Then we will give you a Vendo app. Vendo app is nothing but the video commerce platform to all the businesses, but this will be chapter wise shared app. So we will give
a chapter window app, so you can place your product there free of cost. You can do everything that you want. Here also we'll have monetization on it, 50-50, 70-30 and 80-20 on the content that we will put in the respective window apps. Pre-investment decks, Essential will have a open forum pre-investment decks. Pro will have second priority, Elite will have first priority. Now, what is pre-investment deck? There are n number of opportunities in the market. Let's say today I am sitting here in Ahmedabad. I keep on getting many opportunities where I can invest, and I have invested also in past, where I have gained really good incentives on that. So I will provide that on platform, but the first preference will be given to the elite guy because he has more money. The second guy will get second priority, and the third guy will get up open forum where he and among his all his chapter members can think on it, and if they want to invest, they can invest on that. Then there is a business advisory, chapter wise mentorship we will give, training we will give without a cost. But if he wants us to do an actionable on it, it will be on cost. Secondly, chapter wise mentorship in pro also we will give, but actionable will be on cost. In elite, the cost is included. So if an elite class member wants to go for an IPO, we will give him all the advisory service at zero cost. That is why in starting I said no, paying 9 lakhs and getting into elite club doesn't make sense for a startup, because startup will not think of getting into an IPO immediately. Whereas an elite class, of course, he will be interested in going for an IPO. So here the IPO services are integrated, whereas a startup or a maybe a pro can always go for it. I have no issue with that, but that will be an additional cost. Then we talk about personalized business plan and IPO funding. I think this we have already covered. The entire business plan, we will give you strategy in the chapter for a training, but if you want that entire plan has to be executed by us. In essential, it will be at cost, and in pro and elite, it will be included in the package. After this meeting, you will get this PPT, so don't worry, don't take photos and all, you will get it. Okay, the second social media marketing package that is included in this, we will give you a reach of 2 lakh. I'll repeat myself, of 2 lakh in essential, 0.5 million, which is 50 lakh in pro, and 1 million reach free of cost in elite package. So if you will take the cost of this only, you are almost done with the money that you have given us. Just social media marketing package that we have given and the window app that we have given. We will get, and this report is not by Global Garner. We will share a report from Meta only, showing that this post has reached to this much people, right? Then complementary report launches, essential will have 6, pro will have 12, elite will have 36. And as I told you earlier, it is not limited to the member. He can give it to his family members, his office staff. He can use it anywhere. So his eligibility is 6, 12 and 36. Business development trainings are included. For some, it is at add-on cost. In pro and elite, it is included. Then national convention, it will be at cost, and pro and elite, it will be included. I think it is all readable and understandable. Now, the last point that we want to cover here is the community will have an advantage on buying group products. If you are a community member and you are a member of Essential Club, now as an Essential Club members, you will be eligible for flat 10% discount on any of the product up to 90,000 rupees. So let's say you have paid 90,000 to get into the Essential Club, but now this 90,000 you can recover. First of all, you have recovered it through social media packages, launch packages that we have given, trainings that we have given,
Now the last part is, in real money terms, you will get extra 10% discount on any of the group products. So let's say if you are buying Vendo app, you are buying Local Pulse, you are buying Franchise 360, up to 10% up to 90,000 rupees, which is your package cost. You can take it out from the discounting that you are eligible for. Same goes for Pro. It will be flat 15% up to 4 lakhs. For Elite, it is 20% up to 12 lakh rupees. So buying group products of Global Garner will also be beneficial for you. So I think this is the most, what you say, digitalized and empowered club that you are going to join today. And even if there are 5 members in the club, you will be helping each other, understanding the business and taking it forward, because this chapter will talk only about business, right? Why choose us? Of course, it is 360-degree business support. Networking is redefined with us. Proven expertise. We have already walked the way that we want to tell you, okay, you should do this business like this. So we have already covered those points. When we are talking about no guarantee loans, we have already taken those loans. When we are talking about social media marketing, we are already doing social media marketing. When we are talking about digitalization, we are already into digital space. So whatever we are talking, we have already used in our ecosystem. Personalized strategies, of course, we are not saying, okay, you copy paste this everywhere. No, everything is because there is a dedicated RM. He will understand your needs and therefore he will offer the different solutions that we have talked about. Holistic approach to the expansion, of course, because it is purely a dedicated RM thing. So of course, it will be a holistic approach. This thing, technology, community, and of course, driven growth. Totally, we are talking about technology. It is not just that we are verbally talking and we are not executing. The entire thing is already on board. Community can collaborate. Of course, there is a huge opportunity for everyone to collaborate with each other. And the best part is, it is national and going forward worldwide collaboration that you will have in GG community. And as always, in all our package, we are giving you 1 lakh people reach for your community work, for your chapter, whenever any chapter gets started, right? With this, thank you very much. These are other GG products which we are going to launch very soon for trainings. They are already live, but now training is happening. So we'll talk this. Meanwhile, I'll request Hardik to just give you a demo of our app and dashboard so that you have a clear idea how our things will look like. Hardik, over to you. Okay, now I'll share my screen. Just a moment. So you will get a full-fledged dashboard like this. Not only a dashboard, but there are a lot of other things with the app. So you will be able to see all the members across your community, and even you can check their details. Say if there is any member, so you can explore the entire hierarchy who is in your chapter. You can share your business detail directly like this. So this is a dedicated QR generated by system. When someone scans it, so all the details gets automatically fetched. Also, you can share the same thing on your WhatsApp directly. You can explore all the events that are happening nearby you
or across the globe. Also, you will be able to see all the stats, like how many referrals has been done by you, or how many referrals are being given by you. Also, you will see the trending members based on the business they have generated or referrals they have done. Also, there is a scan button at the top, which will help you whenever you visit any of your local events or national events or global events. So you can just click on that scan button and your attendance will be marked. So that is for punching your attendance. Also, you can go to add-on services. We have some of the services which you can avail directly from here. Let's say you want to get some legal advice, or you want some personalized business stuff to be done. So those consultation and everything you can purchase right from the app itself. Also, you will be able to check those details on your My Delivery, where you will get all the deliverables from there itself. This is something within the chapter. So what are the events happening? Uh, what business you have generated? What referrals you have given? This is the chapter specific thing, and you will be able to see your hierarchies, like who is managing what, or zonal chapter director or chapter president. Those things you can explore from here itself. Obviously, this is an event page from where you can explore all the events. You can explore referrals from here. So let's say you want something. Let's say you want a real estate. You want to buy a real estate property, for example. You can create it from here, and anybody who is interested into it, they can simply request their details. Like I am interested into this service, or I can help you get this service. You will be able to explore all those people here, and you can, if you have done the trade with any of the person who showed interest, you can directly approve it from here, and it will be added into the business they generated and the referral you created. Also, you can explore all the referral requests across the different domains and the community. So whoever, let's say anybody needs anything, so you will be able to explore those from here, and you can show your interest. So there would be some time bound activities. So let's say I opened it for a month only. So when it is expired, you will not be able to then receive new referrals into it. So this is basically to create the to find the referrals, or to for you to do the referrals, right? And you can do this filters. So if your business is something which you can globally promote or globally serve, then you can explore those things as well. Or if you are having some business which is limited to some cities, so you can do that also. So in that case, you will only see the details of the within the cities. You can explore those filters. And obviously, you can manage your profile from here, or you can raise the ticket, or you can find the chapters. You can find the members from the chapters, and those details you will be able to explore from here. So yeah, this is how the community app will look like, and very intuitive features and very simple to explore. We'll be posting a lot of other details here as well, which can be controlled by the chapter. Yes. Okay. Thank you, Hardik. So now if you have any query, you can ask me and we'll be more than happy to answer you. You can raise your hand and then we'll unmute you. Yeah, Sambhai. Please unmute yourself. I got two doubts. Yeah. One is like
you told like prepaid card for 1 lakh. Suppose if it is in, I mean, the basic one. So 1 lakh means monthly he can charge 1 lakh rupee without any or yearly. Throughout his term, that is yearly, he Yearly can, 1 lakh. yeah, yearly 1 lakh he can charge, and that 6,000 that he need to pay, he need not to pay that, but still his cashback will continue. Continue. So only one time, right? Yeah. And second thing, this 9,000 while we are purchasing that community app, this will be eligible for GG cashback. Yes. Every product that GG has, it will be applicable for that. Okay, fine. Right, sir. Yeah. Thank you. Anybody else who has any query? So still we have almost 28 minutes now. Sorry, 18 minutes. If not, then we'll close the session and then all of you can go move out and Hindi participant can come in. Yeah, Sam bhai. Please go ahead. Please unmute yourself. Okay. Because you see, by just having a meeting or by talking, we can't able to get it done. I mean, get it understood easily. So you told that the demo app will be served to us to know better. Is there any Demo possibility like that? app, of course not, because every app need to be customized to your chapter. But of Okay. course, one to one we can meet and make you understand about the every aspect of this thing. So Look, this suppose time we have if I not have a customer, developed a user app, so it is not a generic app that we are talking about in all our apps. What we can do is we can create a demo for you, and if you and your team wants to have a special session, we can do that. okay. So whenever if I have a customer, if I have send the details, so we can have a Zoom directly. Yeah, sure. You can Presentation will start be a chapter done in by. Kerala saying that all these benefits, and I hope we have enough benefits to compete with any of the networking companies which are there. Hmm. I hope that would have been very clear to you right now. Right. So each and every person coming into that chapter, suppose if I bringing a group of people to be into system, so each and everyone have to go for this minimum base plan. Yeah, So to enter into that chapter, 90,000 is must. yes, GST, yes, GST and 90,000 is must. yes. Okay, right. Okay, fair enough. So we'll close the session for 15 minutes and then we'll restart with Hindi. Thank you.
हाँ जी, गुड इवनिंग. Let's start with our presentation. ओके, सो आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है जीजी कम्युनिटी. अब जीजी कम्युनिटी अगर आप देखेंगे तो आप जनरली ऐसा सोचेंगे कि बहुत सारी कम्युनिटी ऑलरेडी चल रही है. दिस इज वन ऑफ द कम्युनिटी दैट वी आर कमिंग अप. तो मेरे हिसाब से इस कम्युनिटी को आपको बिल्कुल अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक मैंने जितनी कम्युनिटीज देखी हैं, चाहे वो जेसीआई हो, चाहे वो बीएनआई हो, या और भी इस तरह की बहुत सारी कम्युनिटीज देखी हैं मैंने देखा कि प्राइम फोकस इज नॉट ऑन टेक्नोलॉजी. दे आर जस्ट आप वहां जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और वापस आ जाते हैं. ना उसके पहले ना उसके बाद में आपका कोई कनेक्शन डिजिटली नहीं बन रहा है यहाँ पे. जबकि अगर आप कम्युनिटी बिजनेस देखेंगे तो बहुत सिंपल है कि आप वहां पे इसलिए जा रहे हैं कि आप बिजनेस को अपने एनरिच कर पाए. वेरएज वो एक टॉक शो बन के रह जाता है जहां पे आप फटाफट एक दूसरे को काट देते हैं या अपने बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत बात कर पाते हैं. तो उसी हर्डल को हटाने के लिए हमने जीजी कम्युनिटी बनाया है, और हमने बहुत सारे मॉडल्स को स्टडी करने के बाद फाइनली एक मॉडल बनाया है जिसमें हमें लगता है बहुत फर्क पड़ेगा. अब इसमें एक एक जो कहते हैं ना, अगर आपको मैं फैक्ट शेयर करूं कि ऑलमोस्ट 10 बिजनेस जो आज स्टार्ट होते हैं उनमें से 9 बंद हो जाते हैं. इसका एक रीजन तो ऑफकोर्स ये भी है कि स्टार्टअप करना एक कूल थिंग हो गया है, मगर दूसरा ये भी फैक्टर है कि आज कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहां पे मुझे ऑल इन वन 360 सोल्यूशन मिलता हो मेरे बिजनेस के लिए, जो कि हमने कोशिश किया है ग्लोबल गार्नर कम्युनिटी में डाले. और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा हूं, मेरा मकसद जब मैं बोल रहा हूं इस बात को तो गंभीरता के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि हम यहाँ पे उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं जो हमें हमारी जर्नी में, जो पिछले 9 साल की जर्नी में है, जो हमें लैक महसूस हुआ, जो हमें महसूस हुआ कि अगर ये होता तो हमारे साथ और अच्छा होता, अगर ये चीज हमें पहले से पता होती तो हमारे लिए बेटर होती. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस स्टार्ट करता है उसको नहीं पता होता है, और धीरे धीरे उसको पता चलता है और वो डैमेज काफी कर चुका होता है अपने बिजनेस को. तो वो डैमेज ना हो और वो एक पूरा सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़े, उसके लिए हमने जीजी कम्युनिटी बिजनेस बनाया है. तो ऑफकोर्स इट इज ऑल इन वन प्लेटफॉर्म. इसमें आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा, कैसे होगा ये हम आगे बात करेंगे. सबसे पहले है आपकी स्टेज को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आप किस बिजनेस स्टेज पर हो. आई होप मेक्स इन. मेरी स्क्रीन कौन सी शेयर है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ ठीक है, दिख रहा है. ओके ग्रेट. हाँ जी. सो पहली चीज जो हम आइडेंटिफाई करेंगे जब आप कोई हमारा चैप्टर ज्वाइन करेंगे कि आप किस स्टेज पे हैं अपने बिजनेस के. और स्टेज से मेरा मतलब है, ये क्यों आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एक बच्चे की उम्र है 20 साल और वो पढ़ रहा हो क्लास केजी में, तो आप ऑफकोर्स सी बात है आपको लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है कि भाई 20 साल का बच्चा एक क्लास केजी में या क्लास फर्स्ट में पढ़ रहा है. तो वैसे ही क्या होता है, कई बिजनेसेस हम देखते हैं वो 8-10 साल पुराने, 20 साल पुराने हो जाते हैं, बट वो सिंगल मैन शो रहते हैं. उसमें कोई सिस्टम प्रोसेस नहीं होता है, उसका कोई कोई कहते हैं ना कि उसको मैनेजमेंट नहीं चला रहा होता, एक मैनेजर चला रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं ना लाला जी का बिजनेस, कि लाला जी जब तक बैठे हैं तब तक बिजनेस चल रहा है, लाला जी नहीं है तो बिजनेस बंद हो जाता है. सो आप अपने बिजनेस में किस स्टेज पे होने चाहिए. अगर आप 12 साल पुरानी कंपनी है तो आपके लिए पॉइंटर्स यहाँ पे बने हुए हैं कि आपको क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आप 12 साल की कंपनी लगे. करेक्ट. तो आपका डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेटा ड्रिवन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो एस्पेक्ट आपको कब पहुंचना चाहिए ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे. ऑफकोर्स ये हमारे बेस्ट एक्सपीरियंस से हमने ये पूरा एक बनाया है. ये चेंज भी हो सकता है, ये इससे बेटर भी हो सकता है, ये ऑफकोर्स ही बात है, हमने शायद बेस्ट अभी तक सोच लिया है, क्योंकि अभी तक मैंने ये सब चीजें किसी भी कम्युनिटी में नहीं देखी हैं. राइट. देन आप देखेंगे इट इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर बिजनेस नीड्स. जहां पे ऑल जब मैं बोलता हूं तो इसका सच में मतलब ऑल होता है, क्योंकि आपको कंप्रेहेंसिव बिजनेस सपोर्ट मिलेगा,
आपको बिजनेस एंड वेल्थ प्रोग्राम्स मिलेंगे, आपको कोलैबोरेटिव इनरिचमेंट प्रोग्राम्स मिलेंगे, और आपको और अदर एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स भी मिलेंगे। अब यहां पे मैं दो चीजों के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले बात करना चाहूंगा बिजनेस, जो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं। सबसे पहला बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो हमने दिया हुआ है नेशनल पिच डेक। और ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस की है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि मुझे आज भी याद है जब मैं पहले ग्लोबल गार्नर समझाने चलता था तो मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे का समय चाहिए होता था कि मैं ग्लोबल गार्नर किसी को प्रॉपरली समझा पाऊं, और लोगों के पास इतना समय नहीं होता है। मुझे ये बहुत लेटर पार्ट में, मुझे लगता है करीब कम से कम 4-5 साल बाद समझ में आया कि लोगों को पहले अट्रैक्टिव टीजर्स देने पड़ते हैं, और अगर अट्रैक्शन आ गया तो अब वो आपके साथ 3 दिन भी बैठ जाएंगे या 10 दिन भी आपके साथ बैठ जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, एक मूवी देखने जाने से पहले हमें उसका ट्रेलर देखना पसंद है। हर मूवी का एक ट्रेलर जरूर आता है कि भाई कोई आदमी अपना 3 घंटा बैठेगा जहां पे जाके उस चीज को पहले ग्लिम्सेस में वो देख ले, जिससे उसको अट्रैक्शन रहे कि एंड पार्ट भी देखना है मुझे, स्टार्टिंग भी देखना है। तो पिच डेक वो चीज होती है कि मुझे मेरे बिजनेस का पिच करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको हेल्प करेंगे आपकी पिच डेक बनाने में, क्योंकि ये जर्नी अब हमारे पास भी क्लियर है। आज मुझे अगर किसी को ग्लोबल गार्नर बिजनेस समझाना है तो मुझे 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए। 10 मिनट भी मैं बोलूंगा ज्यादा हो गया, मैं 3-4 मिनट में आप ग्लोबल गार्नर किसी को भी समझा पाता हूं, जो प्रक्रिया को मैं पहले कम से कम 5 से 6 घंटे में करता था। फिर ग्लोबल डिजिटलाइजेशन मैं आपको दे रहा हूं, वाई हाउ, कैसे। मैं आपको सारे टूल्स दे रहा हूं जिससे आप अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे ले जा सकते हो, हमारे सारे कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए। प्लस आपका अपना चैप्टर भी ऑल ओवर वर्ल्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकता है थ्रू टेक्नोलॉजी। यहाँ पे फिजिकल पहुंचने की जरूरत नहीं है या कोई टिकट लेके पहुंचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर सकते हो। देन ये कम्युनिटी जो है केवल 18,000 कम्युनिटीज में डिवाइड होगी। तो बहुत ही छोटा सा हम ग्रुप बना रहे हैं जहां पे हम सारे कम्युनिटीज को एक साथ लेके आएंगे और बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब इसको बना के रखेंगे। फ्रेंचाइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट, हम आपको ये भी गाइड करेंगे कि आप अपने फ्रेंचाइज कैसे बनाओ, आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप अपना प्रोडक्ट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ। मैं बहुत लोगों को मिलता हूं, लोगों को पता ही नहीं होता फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कैसे बनाए जाते हैं या उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनी जाती है। मैं अक्सर देखता हूँ, जैसे मेरे कई गुजराती फ्रेंड्स हैं, वो क्या करते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट पे एक इंसेंटिव रखा कि 10 लाख का माल बेचेंगे तो आपको 2% कमीशन मिलेगा, और अगर 1 करोड़ का माल बेचेंगे तो आपको 1% कमीशन मिलेगा। तो मैंने उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों भाई? तो बोले देखो 10,000 का बेचा तो उसको 20,000 रुपये मिला, बट जब वो 1 करोड़ का बेच रहा है तो मैं जब उसको क्या कहते हैं 1% दे रहा हूं तो उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है। तो मैंने कहा पहले आप परसेंटेज में बात कर रहे हो और दूसरे में आप रियल मैन मनी की बात कर रहे हो। तो इसमें कभी आदमी एनकरेज ही नहीं होगा ज्यादा बेचने के लिए, वो हमेशा यही कोशिश करेगा वो कम बेचे। आप खुद सोच के देखो ना, वो क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देगा पूरे बिजनेस को, बड़े बिजनेस के लिए कभी जाएगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है, बट हमारा तो सालों से ऐसे ही चल रहा है, हमारे सारे लोग हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो मैंने कहा इसीलिए बिजनेस शायद उतना स्केल नहीं हो पाता है हमारा। वाई? बिकॉज हमें ये आदत ही नहीं है लोगों को देने की, परसेंटेज वाइज देने की। हमारा जैसे ही एक एक थ्रेशोल्ड हमारे दिमाग में है कि भाई ये एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, तो हमने एक एक ऊपर वो स्केल लगा दिया। वो स्केल बेसिकली हम एम्प्लॉय के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, वो एम्प्लॉय तो कल छोड़ के कहीं और चला जाएगा, बट ये स्केल हम अपने बिजनेस ग्रोथ पे लगा रहे हैं। So, कोई भी बड़ी कंपनी आप देखेंगे कभी भी इस तरह का स्केल नहीं लगाती, वो परसेंटेज में ही बिजनेस देती है। मैंने बिरला के लिए काम किया, मैंने टाटा के लिए काम मैंने रिलायंस के लिए काम किया है, मैंने एचडीएफसी के लिए काम किया है। वहां पे कभी कोई ऐसा अपर लिमिट नहीं होता था कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, जितना आप करोगे उसका इतना परसेंटेज आपको मिल जाएगा। देन डेडिकेटेड आरएम फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग होगा आपके पास। डेडिकेटेड आरएम से मेरा मतलब है क्योंकि हमने इसमें हर पैकेज में आपके हर बिजनेस जो हमारे साथ एसोसिएट होंगे उनमें एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का पैकेज दिया हुआ है साथ में। अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग पैकेज, क्योंकि हर आदमी की नीड अलग अलग है, तो इसलिए एक डेडिकेटेड आरएम होगा जो आपको हेल्प करेगा कि आपका सोशल मीडिया कैसे एनहांस करें और कैसे आप बेटर रीच पाएं और उस बेटर रीच से बेटर बिजनेस कर पाएं। इवन जो आपके सेशंस हैं आप उनको लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर पाओगे यहाँ पे।
नेशनल एक्सपो अपॉर्चुनिटी, आप सबको याद होगा कि हमारे वहाँ देवराज ने, कर्नाटका के जो स्टेट हेड हैं, उन्होंने एक एक्सपो, बहुत बड़ा शानदार एक्सपो किया था यहाँ पे बैंगलोर में। सेम एक्सपो अब आप हम यहाँ पे कर सकते हैं। जब हमारे पास इतने सारे ऑलरेडी चैप्टर होंगे, इतने सारे ऑलरेडी बिजनेस होंगे, तो हम कोई भी एक वेन्यू डिसाइड करके एक जगह कर सकते हैं। तो केवल हमें कॉस्ट ऑफ एक्सपो देनी पड़ेगी, कोई हमें प्रीमियम रेट नहीं पे करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारे साथ क्या होगा कि हमें ये टेंशन नहीं होगी कि हम ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं जस्ट फॉर अ स्टॉल। ये हमारा पूरा इवेंट हो सकता है, करेक्ट। देन कंज्यूमर रिवॉर्ड, बिकॉज ऑफ ग्लोबल गार्नर यू आर गिविंग कस्टमर को एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी दे पा रहे हैं, जिससे आप आपका मार्केट और अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। फिर हम आपको हेल्प करेंगे बिजनेस एंड वेल्थ प्रोग्राम के अंदर में। सबसे पहले है बिजनेस प्लान। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पिच डेक और बिजनेस प्लान में क्या अंतर है। पिच डेक, जैसे मैंने बताया, एक ट्रेलर होता है आपके बिजनेस मॉडल का। ये है बिजनेस मॉडल डिटेल्ड में, जहां पे आप बात करेंगे कि जैसे मैं कई बार अपने कई फ्रेंड से पूछता हूं, भाई तुम्हारा 5 साल का प्रोग्राम क्या है, 5 साल में क्या करना चाहते हो। वो बोल देते हैं पैसे कमाते जाएंगे, लगाते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। बट दे डोंट नो कि 5 साल में वो करना क्या चाहते हैं। वेयर एज मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि आपका बिजनेस प्लान एक आपके पास पेन एंड पेपर पे होना चाहिए। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं। जैसे लोग बोलते हैं ना, रेलवेज, इंडियन रेलवेज हर जगह लेट ही जाती है, तो ये टाइम टेबल बनाने की क्या जरूरत है, वो लेट ही जाएगी। तो मैं, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग ये हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने कहा ये बताओ कितना लेट जा रही है, कैसे पता चलेगा। फिर तो वो जब पहुंचेगी वो टाइम से पहुंच रही है। तो इसलिए आपको आपका बिजनेस प्लान होना बहुत जरूरी है, कि आपको ये पता चले कि आपका बिजनेस किस जगह पहुंचा है, और क्या वो बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग सही है, या पीछे है, या आगे है। अगर आगे है तो आपको अपने बिजनेस प्लान को सही करना पड़ेगा कि यार मेरे बिजनेस में पोटेंशियल ज्यादा है, ये और आगे हो सकता था, ये गलत जगह मैंने इसका बिजनेस प्लान गलत बनाया है। या फिर अगर मैं नहीं पहुंचा हूं और मैं शॉर्टफॉल में हूं, तो मुझे ये देखना पड़ेगा मैंने बिजनेस प्लान में क्या गलत प्लानिंग करी है, जिसकी वजह से मैं शॉर्टफॉल में हूं, मैं उस जगह भी नहीं पहुंचा हूं जो मुझे उस समय दिख रही थी। तो बिजनेस प्लान इसलिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले हम आपको यहीं पे हेल्प करेंगे आपका अपना बिजनेस प्लान बनाने के लिए। सेकंड है स्टाफिंग, जहां पे हम आपको स्टाफ रिक्रूट करने में कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जहां से आप हमारे थ्रू भी स्टाफ रिक्रूट कर सकते हैं और कम्युनिटी में भी अपनी कर सकते हैं। फाइनेंसिंग, जैसा कि आप सबको पता है, हमने जगदई फूड को बिना किसी कोलेटरल के लोन लेके हमने स्टार्ट किया है। आज मुझे 1 करोड़ का लोन लेने के लिए कोई मॉर्गेज नहीं रखना पड़ा, कुछ नहीं रखना पड़ा, और मुझे 1 करोड़ रुपए बैंक ने दिया है। और यहां तक बोला है कि अगर आपको 5 करोड़ रुपए तक इसमें जरूरत पड़ेगी तो आप हमसे ले सकते हो। अब ये स्कीम्स किसी को पता ही नहीं है। इसमें सब्सिडी भी मुझे मिल रही है, कैपिटल सब्सिडी भी है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी है। तो देखा जाए, ये मुझे पहले पता ही नहीं था। जब मुझे मेरे कंसल्टेंट ने बताया तो आई वाज सरप्राइज कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता है। बट देन जब उन्होंने मुझे इलस्ट्रेट करके दिया, जब सारी चीजें करके दी, टुडे आई नो कि हाँ ये होता है। तो वही एक्सपर्टाइज मैं अब आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ, क्योंकि उसी कंपनी से मैंने अब टाई अप कर लिया है, जो हमारे कम्युनिटी में लोगों को असिस्ट करेंगे। तो आपको इक्विटी बेस्ड फंडिंग चाहिए, आपको लोन चाहिए, आपको सब्सिडाइज लोन चाहिए, आपको इंटरेस्ट लोन सब्सिडी चाहिए, आप इस कम्युनिटी में होंगे तो ये सारे काम आपके हमारे वो लोग करेंगे। परमिट्स एंड ईगल्स, जैसे मैंने बताया, मैंने कई बार मुंगी खाई है, उसके बाद मुझे पता चला यार ये मेरा लाइसेंस मेरे पास नहीं था, ये मेरा परमिट मेरे पास नहीं था। फिर हमने उसके पीछे फाइट किया, उसकी पेनल्टी भरा, और फिर हमने वो लाइसेंस लिया। क्योंकि डे वन यू डोंट नो, आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको नहीं पता होता है कि इतने सारे लाइसेंस लगेंगे। और अगर आप सच, मुझे, मैं तो कई बार बोलता हूँ कि अगर मुझे सच में पता होता कि इतने लाइसेंसेस चाहिए होते हैं बिजनेस रन करने के लिए, तो शायद मैं बिजनेस ही नहीं करना शुरू करता। क्योंकि फिर मुझे लगता कि यार मैं केवल लाइसेंसिंग ही करूंगा। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, बिकॉज इसमें आपको इनबिल्ट मार्केटिंग टूल्स हम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी कम्युनिटी में मैंने आज तक नहीं देखा कोई इनबिल्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग पैकेज दिया हो। तो यहाँ पे हम आपकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे भी फोकस करेंगे। बिजनेस ट्रेनिंग, आप देखेंगे हर आदमी की बिजनेस नीड अलग है। मैं हर बिजनेस की नहीं बात कर रहा हूँ, बिजनेस के अंदर ही बिजनेस को अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। एक फ्रंट लाइन सेल्स मैनेजर से लेके एक मिड मैनेजमेंट से लेके टॉप मैनेजमेंट, सबको एक डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट चाहिए। वेयर एज आज हमारे लिए ट्रेनिंग का मतलब होता है मोटिवेशनल ट्रेनर, जो आएगा और एकदम जोश डाल देगा, बंदे कल से काम पे लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूं कि ग्लूकॉन डी पी के दूध का पावर नहीं मिलता।
दूध से आप बिल्ड करते हो अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए, और ये ग्लूकॉन डी शायद आपको इंस्टेंट एनर्जी दे सकता है, लंबी शक्ति नहीं दे सकता है। तो वैसे ही आपको जो बिजनेस ट्रेनिंग होती है वो अलग अलग लेवल की होती है, जहां पे आप सिर्फ मोटिवेशन नहीं चाहिए, रियल फैक्टर्स को एनालाइज करते हुए आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। जो हम अलग अलग ट्रेनर्स को अपने सिस्टम में ला रहे हैं वो आपको ये ट्रेनिंग्स देंगे, और इसमें एक्सपर्टाइज डोमेन का आदमी आके आपको ट्रेनिंग देगा। देन कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, किसी भी बिजनेस के लिए बिजनेस के साथ साथ और बहुत सारी एक्टिविटीज चाहिए होती हैं, जैसे आउटडोर गेम्स, टीम बिल्डिंग। अब जैसे मैं हमेशा इस चीज का एग्जांपल लेता हूं, जब हमने स्टार्ट किया था हम 3-4 लोगों की केवल कंपनी थी। अब मुझे कोई एक्टिविटी करनी है, मैं 5 लोगों में क्या एक्टिविटी करूंगा? बट अगर उस समय कोई कम्युनिटी जैसा बिजनेस चल रहा होता और मैंने उनको ज्वाइन किया होता जाके, तो मैं क्रिकेट भी खेल पाता, मैं बास्केटबॉल भी खेल पाता, मैं वॉलीबॉल भी खेल पाता, मैं सब कर पाता। वाई? बिकॉज क्योंकि वहां पे 4-5 कंपनियां मिल के कर रही होती या चैप्टर मिल के कर रहा होता, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है अलग अलग चीजें करने की। तो वही हम इसमें पूरा शेड्यूल के साथ करेंगे, पूरा एक ऑर्गेनाइज वे में करेंगे कि आउटडोर गेम्स भी हम बिल्ड करेंगे, हम बुक्स और हेल्थ सब्सक्रिप्शन भी आपको दिलवाएंगे, एंड इट इज ऑल इंक्लूडेड इन दी पैकेज। हाँ, मतलब इसके लिए कोई अलग से पेमेंट नहीं आ रहा है आपका। सोशल इवेंट्स कराएंगे, कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम करेंगे, एयरपोर्ट लॉन्चेस की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है हमारे प्रोग्राम में। जैसे आपने देखा होगा, जनरली क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर आपको फ्री एयरपोर्ट लॉन्चेस मिलते हैं, बट जनरली वो एयरपोर्ट लॉन्चेस किसको मिलते हैं? जिसके नाम पे कार्ड होता है। करेक्ट? आज मुझे मान लीजिए मेरे बेटे को जाना है, तो वो मेरा बेटा मेरा कार्ड भी नहीं यूज कर सकता है। वेयर एज हमारे एयरपोर्ट लॉन्चेस में अगर मैंने आपको बोला है कि आपके पास 20 एक्सेस पॉइंट्स हैं, तो आप 20 बार एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो आप करें, आपकी फैमिली करे, या आपके ऑफिस स्टाफ को आपने दे दिया हो। ये हमारा एक सुपीरियर लेवल का अग्रीमेंट्स हमने किए हैं एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देने के लिए। करेक्ट? देन यू हैव एक्सक्लूसिव प्रीपेड कार्ड। जो हमारा प्रीपेड कार्ड है वो भी हम इसमें दे रहे हैं। CSR एक्टिविटी, नेशनल कन्वेंशन, नेशनल इंटरनेशनल कन्वेंशन, और एज यूजुअल हमारा वेंडर बेनिफिट्स तो रहेगा ही। मेंटरिंग, जीजी, OTT, रेवेन्यू शेयरिंग एंड विंडो स्ट्रीम, 2 मेजर प्लेटफॉर्म इसमें हम आपको इंटीग्रेटेड दे रहे हैं विदाउट अ कॉस्ट। हमारा विंडो स्ट्रीम और OTT ऐप, और इन पे हम दोनों पे आपके साथ रेवेन्यू शेयरिंग भी करेंगे। ये शेयर्ड ऐप होंगे, ऑफकोर्स आपके एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, जैसा कि हम इनको डिजाइन कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। ये शेयर्ड ऐप्स होंगे, और इन पे जो भी ट्रैफिक आएगा उसको हम मोनेटाइज करेंगे, और जब मोनेटाइज करेंगे तो उसका रेवेन्यू को एक सर्टेन अमाउंट में हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपके चैप्टर के साथ बेसिकली। डेडिकेटेड RM आपको मिलेगा, एडिशनल एडवांटेज एंड मेंबरशिप पैकेजेस। ओके, सो अब पैकेज स्टार्ट कैसे होते हैं ये भी समझ लीजिए। तो हमारा पैकेज जो मिनिमम स्टार्ट होता है फॉर एसेंशियल क्लब, वो 90,000 का है, प्रो 3,60,000 का है, एलिट 9 लाख रुपए का है। अब मान लीजिए मेरे इसकी मगर जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आप एलीट मेंबर बनना चाहते हैं तो आपका 30 करोड़ का टर्नओवर होना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जस्ट अ स्टार्टअप है जिसने अभी 1 लाख रुपए का टर्नओवर किया है और वो एलीट क्लब में आ जाएगा बिकॉज उसके पास 9 लाख रुपए है देने के लिए। ऐसा नहीं होगा। इसी तरह प्रो के लिए चाहिए 10 करोड़ का, और एसेंशियल के लिए चाहिए एटलीस्ट GST सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट आता है कहता है मैं मेंबर बनना चाहता हूं, नो, यू कैन नॉट बिकम अ मेंबर। आपके पास मिनिमम GST होना चाहिए अगर आप एसेंशियल में आना चाहते हैं। प्रो के लिए 10 करोड़ का टर्नओवर, एलीट के लिए 30 करोड़ का टर्नओवर। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, आपको प्रीपेड कार्ड जो मिलेगा उसमें आप 1 लाख रुपए तक का कैशबैक अर्न करने के लिए नो एडिशनल चार्जेस पे आपको कार्ड मिल जाएगा। कोई भी कन्वीनियंस फी आपको नहीं लगेगी, मगर आप 1 लाख रुपए तक का कैशबैक ले सकते हो उसमें। प्रो में आप ले सकते हो 4 लाख का, एलीट में आप ले सकते हो 12 लाख रुपए का, जिसमें आपको कोई कन्वीनियंस फी नहीं लगेगी। OTT चैनल में भी हम आपको बोल रहे हैं कि हम आपको एक रीच लाके देंगे। एसेंशियल वालों को लाके देंगे 1 लाख लोगों तक रीच, प्रो वालों के लिए लाके देंगे करीब 50 लाख लोगों तक की रीच, और एलीट वालों को 1 मिलियन रीच तक हम ले के जाएंगे।
देन ओटीटी चैनल मोनेटाइजेशन में हम 50% आप अपने पास रेवेन्यू रखेंगे, 50% आपको देंगे। प्रो में हम 70% आपको देंगे और 30% अपने आप पास रखेंगे। और एलीट में हम केवल 20% अपने पास रखेंगे और 80% आपके साथ शेयर करेंगे। फिर विंडो स्ट्रीम जो हमने आपके साथ ऐप दी हुई है उस पर भी हम मोनेटाइजेशन करेंगे आगे आने वाले समय में, जहां पे 50-50, 70-30 एंड 80-20 रहेगा। अगेन 80 आपका रहेगा, 20 हमारा रहेगा, 70 आपका रहेगा, 20 हमारा रहेगा, 50-50 में दोनों का 50-50 रहेगा। देन प्री इन्वेस्टमेंट टैक्स, अब ये सब्जेक्ट क्या है हमारा, जैसे आज की डेट में मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आते हैं, मैं कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ, कहीं पे नहीं करता हूँ, बट ये अपॉर्चुनिटीज बहुत लुक्रेटिव होती हैं। तो इसमें एलीट क्लास को सबसे पहली प्रेफरेंस मिलेगी। कोई भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी अक्रॉस कंट्री, हम सबसे पहले इनके साथ शेयर करेंगे। सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी प्रो वालों को, एंड एसेंशियल्स में हम पूरा ओपन फोरम में दे देंगे, फिर उनमें से जिसमें चाहें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आप स्किप करना चाहें वो स्किप कर सकते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी। एक्शन प्लान फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, चैप्टर वाइज हम आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे, बट अगर आपको कोई एक्शनेबल हमारी तरफ से चाहिए तो हम एड ऑन कॉस्ट चार्ज करेंगे। प्रो में हम चैप्टर वाइज गाइडेंस देंगे, एक्शनेबल्स भी आपके एड ऑन कॉस्ट पे होंगे। बट एलीट के लिए पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी और बिजनेस एडवाइजरी इंक्लूडेड है इसमें, दोनों में, पर्सनलाइज एक्शन प्लान मार्केटिंग के लिए भी और इसके लिए भी, आपके बिजनेस एडवाइजरी में। देन आते हैं आईपीओ पे। फॉर आईपीओ द फर्स्ट एसेंशियल इट इज ऑन कॉस्ट, प्रो और एलीट के लिए पूरा पैकेज में इंक्लूडेड है। देन कम्स दी सेकेंड मार्केटिंग प्लान, जहां पे हम एसेंशियल वालों को 2 लाख तक रीच दे रहे हैं, प्रो वालों को 50 लाख तक रीच दे रहे हैं और एलीट वालों को 1 मिलियन रीच दे रहे हैं। अब यही आप केवल देखोगे पैकेज में, जो हम कॉस्ट ले रहे हैं आपसे साल की, वो हम जस्टिफाई कर पाते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट पासेस जो मिल रहे हैं वो 6, 12 और 36 मिल रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको जो एयरपोर्ट लॉन्जेस हमारे वहां मिल रहे हैं, ये आप, आपके फैमिली मेंबर या आपके ऑफिस स्टाफ, आप किसी को भी दे सकते हैं। इट इज नॉट कि आपके नाम पे हैं तो आप ही जा सकते हैं। बिजनेस एंड पर्सनल ट्रेनिंग, ऑफकोर्स इट इज ऑन कॉस्ट फॉर एवरीवन, बट प्रो और एलीट में इट इज इंक्लूडेड अप टू 6 मेंबर एंड 21 मेंबर्स। फिर नेशनल और इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है इसमें, फॉर प्रो एंड एलीट इट इज इंक्लूडेड, ऑल कॉस्ट इज इंक्लूडेड, और एसेंशियल्स के लिए एड ऑन कॉस्ट है। डेडिकेटेड आरएम ऑफकोर्स सबके पास है, बट जो एसेंशियल है उनमें शेयर्ड है और बाकी में डेडिकेटेड है। एंड द फाइनल पॉइंट, जो कम्युनिटी मेंबर्स होंगे उनको एक और बहुत बड़ा फायदा हो गया। जो भी हमारे इंटरनल सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आज की डेट में 9-10 सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं, इनकी कभी भी वो डिमांड कर देंगे, कभी भी वो बाय करना चाहते हैं, तो उनको फ्लैट 10%, 15% और 20% डिस्काउंट मिलेगा। एलीट वालों को अप टू 12 लाख का डिस्काउंट मिलेगा, प्रो वालों को अप टू 4 लाख मिलेगा, एंड एसेंशियल वालों को अप टू 90,000 मिलेगा। सो व्हाट डज दिस मीन इज कि आप किसी भी पैकेज में होंगे, आप अपना पैकेज का कॉस्ट आप मार्केटिंग से रिकवर कर पा रहे हैं, आप ओटीटी से रिकवर कर पा रहे हैं, आप विंडो ऐप से रिकवर कर पा रहे हैं, एंड फाइनली अगर आप और किसी भी पैकेज को खरीदते हैं तो आप उससे कई गुना ज्यादा भी आप रिकवर कर पा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट जीजी कम्युनिटी। सो 360 पूरा बिजनेस सपोर्ट है, नेटवर्किंग को हम रीडिफाइन कर रहे हैं। अभी तक आपने इस तरह का नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं देखा होगा। आई टोटली अंडरस्टैंड ये एक दिन में समझ में आने वाली चीज नहीं है, बट जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे, बार बार समझोगे, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको, और इसको आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हो। इसको बनाने से पहले मैंने बहुत सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को स्टडी किया, एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट से भी किया और वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट से भी किया, बट मुझे नहीं लगता इससे बेटर अभी तक कोई ऑप्शन मुझे दिखा है। पर्सनलाइज स्ट्रेटेजीज आपको मिलेंगी बिकॉज सोशल मीडिया मार्केटिंग उसमें इन्वॉल्व है। एंड विद दिस हर चैप्टर को हम 1 लाख लोगों तक ले जाने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि 18,000 टोटल चैप्टर है। तो हम उस हर चैप्टर, जब भी कोई चैप्टर फॉर्म होगा, उसको 1 लाख लोगों तक रीच करेंगे कि इस चैप्टर को ज्वाइन करें और आप एम्पावर्ड हो। With this, thank you very much. Over to Hardik, and Hardik will take you through the app that we have built.
हार्दिक, आर यू देयर? आप हो? हार्दिक, अभी आप पोस्ट बन गए। हाँ, ओके। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। या प्लीज गो अहेड। ओके, तो कम्युनिटी का इंटरफेस कुछ ऐसा रहने वाला है, जहाँ पे आपको पूरा एक डैशबोर्ड दिखेगा। ओवरऑल बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटीज और नेटवर्क में जो भी हो रहा है वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। सारे मेंबर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, जो आप यहाँ पे किसी भी मेंबर को क्लिक करके डिटेल्स एक्सेस कर सकते हो। आपका यहाँ पे एक इवेंट का सेक्शन होगा, जहाँ पे अगर कोई इवेंट हो रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी कोई लोकल मीट हो रही है या फिर नेशनल मीट हो रही है, तो वो इवेंट की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी। आपका बिजनेस कार्ड यहाँ से आप क्लिक करके किसी के भी साथ स्कैन करवा के डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ से आप सीधा उसको व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो। ये एक लीडर बोर्ड है, जहाँ पे आपने कितना बिजनेस दिया या फिर कितने रेफरल्स दिए या लिए या जो भी है, वो आपके चैप्टर का यहाँ पे लीडर बोर्ड दिखेगा आपको। ऑल्सो जो भी चैप्टर मेंबर्स ट्रेंडिंग है, जिसने ज्यादा बिजनेस दिया है, ज्यादा रेफरल्स दिए हैं, तो वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। कुछ प्लेटफॉर्म में एड ऑन सर्विसेज भी है, जो आप यहाँ से एक्टिवेट या डायरेक्टली पेमेंट करके एक्सेस भी कर सकते हो। फिर ये आपका चैप्टर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पेज है, जहाँ पे कितने मेंबर्स है, कौन है, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। आपके टॉप हायरार्की में कौन है, मान लो चैप्टर प्रेसिडेंट हो गया या फिर जोनल डायरेक्टर हो गया, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। क्लिक करके उनकी डिटेल्स भी एक्सेस कर सकते हो। जो भी आपने इवेंट्स वगैरह की है उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दिखेगी। एक टॉप राइट कॉर्नर पे आपको स्कैन का ऑप्शन दिखता होगा, तो वो ऑप्शन करके आप अपनी अटेंडेंस पंच करवा सकते हो। जैसे मान लो कोई लोकल मीट हुआ है और वो आप उसमें अटेंड कर रहे हो, तो आपको सिंपली वहां पे क्लिक करना है। वो इवेंट जो मैनेज करता होगा उनके पास एक क्यूआर कोड या फिर वही होगा, जो आप सीधा स्कैन करके आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगी। सारे इवेंट्स का यहाँ पे दिखेगा लिस्ट। वो इवेंट्स लोकल इवेंट्स हो या फिर नेशनल हो या फिर ग्लोबल इवेंट्स हो। यहाँ का आपका पूरा रेफरल का जो भी है वो यहाँ पे रहने वाला है। जैसे मान लो आपको कोई चीज की जरूरत है, जैसे मान लो मुझे मेरे बिजनेस नई ऑफिस सेटअप कर रहा हूँ और मुझे फर्नीचर की जरूरत है, तो मैं यहाँ से सिंपली क्रिएट कर सकता हूँ क्या बिजनेस कैटेगरी है, क्या एड्रेस है, क्या कंट्री है, कब मुझे ये रिक्वेस्ट एक्सपायर करवाना है, मुझे लोकल बंदा चाहिए या मैं फिर ग्लोबली भी अलाउ करना चाहता हूँ, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिर जो भी दूसरे चैप्टर्स में मेंबर्स हैं या फिर जिस तरह से आपने यहाँ पे डेटा रखा हुआ है, उस हिसाब से लोगों को आपकी ये रेफरल रिक्वेस्ट है वो दिखेगी। और जिसको भी इंटरेस्ट है वो क्लिक करेगा, तो वो लिस्ट पूरा आपको अपने पर्टिकुलर लिस्ट में दिखेगा। जैसे मान लो ये मैंने सिंपल एक क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे वो पर्सन जिसने इंटरेस्ट दिखाया उसकी डिटेल्स दिखेगी। मैं अगर उसके साथ डील कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट होगी या जो भी है उसको मैं डायरेक्टली अप्रूव कर सकता हूँ, तो वो अपने आप मेरे बिजनेस में लीडर बोर्ड में ऐड हो जाएगा। दूसरा है आपको किसी की रिक्वेस्ट देखनी है, तो यहाँ पे आप पूरा वो लिस्ट है जिसने जिसने डाली हुई है वो डिटेल्स देख सकते हो। आप यहाँ पे इंटरेस्ट बटन क्लिक करके उसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हो। ऑल्सो कुछ सर्विसेज ऐसी है, जैसे मान लो मैंने फर्नीचर का एग्जांपल दिया, तो शायद आप लोकल लोकल पर्सन को प्रेफर कर रहे हो या फिर आप कोई ऐसी चीज मतलब कर बिजनेस में इंटरेस्ट है या फिर रिक्वेस्ट में इंटरेस्ट है जो ग्लोबली है। मैं ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जो जिसमें मैं ग्लोबली सर्विस दे सकता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे फिल्टर करके सारी चीजें एक्सेस कर सकता हूँ। और ये रहेगा आपका पर्सनल सेटिंग का मेन्यू, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल ऐड
अपडेट करना हो गया, बिजनेस प्रोफाइल अपडेट करना हो गया, कुछ इश्यू है तो टिकट रेस करना हो गया, या फिर आपको कोई और चैप्टर में से मेंबर फाइंड करना है या कुछ और डिटेल्स करनी है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें क्लटर्ड नहीं है, मेनली बिजनेस रिलेटेड चीजें हैं, तो वो फटाफट आपको इतने हैंडी वे में आपको मिल जाएगी। ओके ग्रेट है, थैंक यू हार्दिक। ओके सो आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। एनीबडी जिसको कोई क्वेरी हो पूरे प्रोसेस को लेके, ऐप को लेके, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। एनीबडी, किसी का कोई सवाल है? हाँ विवेक। सर अभी ग्रुप डिस्काउंट है ना सर? हम्म। हेलो सर, हाँ उसमें अभी ग्रुप डिस्काउंट में अगर मान लो उसको अगर नहीं चाहिए, किसी और को रेफर कर सकते हैं। 20% मान लो, अगर 20% उसको मिल रहा है तो वो उसके अप खिलाफ टू जैसे आप 4 लाख, लॉन्च। जो भी उसकी अप टू लिमिट है ना उतना ही कर सकता है। हाँ वही सर, अभी आपने लॉन्च में जिस किसी के बोला ना, अभी अपनी जगह से दूसरे को भी बेच सकता है, ऐसा यहाँ पर भी कर सकता है वो? बिल्कुल कर सकता है। ओके ओके, ठीक है सर। ओके, किसी और का कोई और सवाल? इतना ही है तो हम अपना सेशन क्लोज कर सकते हैं। मैं 10 सेकेंड और वेट करूंगा। Okay, with this, thank you very much. Good.